गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतवित्सीदसादनम् ॐ महागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवत्र्यवतु। ॐ महासरस्वत्यै नमः। हरिः ॐ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथिदेवो भव। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिः ओम। वेद संस्कृति समिति चर्चा वेदिकायां सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। आगच्छन्तु। अद्य संभाषणकार्य समावेशे व्यास प्रचारं विषये आरम्भं कुर्मः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। सर्वेभ्यः आह्वानं करोमि। सर्वेभ्यः नमस्कारं करोमि। प्रथमं अस्माकं विशिष्ट अतिथि स्वामिनी सद्विज्ञानंद महोदयम् आह्वानं करोमि। स्वामिनी नमस्कारः। वेद संस्कृति समिति अद्य चैत्र पौर्णमी शुभदिने पंचसप्तति चर्चा कार्यक्रमम् आरम्भं करोति। अद्य त्रीणि व्यासानि प्रदर्शनं कुर्मः। प्रथमव्यासं ऋचा गुर्नानी महोदये करोति। तदनन्तरं अंशमस्ति योगा विषये। द्वितीयं प्रीति महोदये करोति। प्रीति महोदये विषयमस्ति डॉक्टर प्रीति महोदय विषयमस्ति एन्शियंट इंडियन नॉलेज ऑफ ओशनोग्राफी ऑन ओशनोग्राफी। द्वितीय विषय ओशनोग्राफी अस्ति। तृतीय विषयमस्ति सोनिक ज्योमेट्री इन टेम्पल आर्किटेक्चर बाय तनिष दत्ता एंड मोनिशा घोष। सो त्रीणि व्यासानि सन्ति। प्रथमव्यासं स्वामिनी प्रसंगानन्तरम् आरम्भं कुर्मः। प्रथमम् अहम् अस्माकं विशिष्ट अतिथि स्वामिनी सद्विज्ञानंद महोदयं गुजराततः आगतवती ताम् आह्वानं करोमि। स्वामिनीजी आगच्छन्तु। स्वागतं। भवतः वेदाशीर्वचनं दत्वा किञ्चित् भवतः सन्देशं दत्वा आरम्भं कुर्मः। सन्देशं ददातु इति प्रार्थयामि। नमस्कारः। स्वामी जी आरम्भं कुर्वन्तु। ओके। नमस्कार, नमस्ते टू एवरीवन। मेरा नाम रिचा गुरनानी। रिचा जी प्लीज वेट। यस या फॉर यू ओनली। स्वामिनी जी भवती आरम्भं करोतु। ओके। ओम हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु
avatu mam, avatu bhaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Saha Vidyan Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwarah, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Namaskaram to all. This is a very good program today. We have a very good topic also, and we will learn about the ancient knowledge about yoga. There is a very good article on yoga also. I went through it. So we will have a new perspective of yoga also today, ancient knowledge also. And more people are getting involved. More and more people are sharing their knowledge. It's a very good program. And I'm sure that our program will have an impact on government also, because now government also is working on the Bharatiya Samskruti Vidya. So other day Narendra Bhai had a meeting also for Itihasa of Bharat. What important thing is that by this our lectures, we have to present the true Itihasa of Bharat, not India. Forget about the word India. I'm again and again telling this thing because British people have coined this word India. Otherwise, it is a Bharata. So Bharata Varsha is there, and we have to present the through these lectures also people can understand what is the Itihasa of Bharata. And so from the standpoint of Vedic knowledge or technology or science, we are presenting these things, but also it shows that our Itihasa was very good, very well developed. And so all these lectures can help to get to the Itihasa also. Because any culture where they don't have a respect for the ancestors, it doesn't grow. That is what we are lacking. Our children don't have any kind of the respect for our culture. And so I'm very happy that we are trying this, and I'm sure through this we can write the true history of India, which will help us to develop the respect for our culture. We know how Narendra Bhai is taking into Bharata in the international level. So he is working in his own way, but we have to work in our own way to make more and more youngsters involved in this program. Or we have to reach more and more young people, because we have 60% youngster in Bharata. So all of us should think about that, how we can reach the youngsters around us, or the schools, or the colleges. So we have to now develop the program where college students get involved, like IIT is there, or engineering college is there, or medical college is there. So let's see how we can develop this program and go to the universities and have a program or webinar in the university itself. So they can, like in our the Gujarat, IIM Ahmedabad, which is the best in India, has accepted that they are going to have a curriculum of Bhagavad Gita as a regular course for IIM. So it like this, universities we have to reach, so we can reach more and more young people and develop the respect for the culture. So I'm very happy that I'm part of this program. I'm very keen to listen to the speakers about what they are sharing with us. All the best to all of you. Hari Om.
Dhanyavada. We take your advice, Swamiji. As Thank you. Bharata is the old ancestral culture of the world, it will definitely have come back to his Bishop Guru position. Now I introduce the today's first speaker, Richa Harish Gurnani from Surat. She is a yoga teacher in an international school at Surat, and last 10-15 years experience she is having. She has presented a paper to us on the yoga, and she, being a yoga teacher, having experience in treating the various diseases including diabetes and other things called Thyroid, stress. Thyroid and other things. She will explain better than me. I request Richa ji to take the Vedika and present her paper to the August audience. Swagatam Richa ji, please take over. Namaskaram to all of you. And first of all, I want to say that I'm honored and I'm very happy to be a part of this program. First of all, before introducing the yoga, I'm feeling very proud to say that the yoga is an invaluable gift of our ancient Indian tradition. योगा हमारे भारतवर्ष की प्राचीन अमूल्य धरोहर है, जिसका अनुसरण आज पूरा विश्व कर रहा है, और इसके लिए प्रत्येक भारतीय को गर्व महसूस होना चाहिए. So, first of all, I want to introduce yoga. What is yoga? The word yoga is derived from the Sanskrit root, and in Sanskrit, this is called yuj. Yuj means to add, to bind, and this also means to link, to connect, union, or communication. It is a true union of our will with the will of God. It means the yoking of all the power of our body, mind, and soul with the power of God. And according to Narad Muni also, yoga is the union of soul and God. In this way, we can say, in simple language, if we want to describe the yoga, we can say that adding good qualities and good karmas within ourselves. According to Bhagavad Gita, yogas karmas kaushalam. कोई भी कर्म जो कुशलता से किया जाए उसे हम योग कहते हैं. जैसे कि अगर हमने कोई भी एक अच्छी हैबिट हमारे अनुसरण में ऐड कर दी, जैसे कि सुबह को उठ के थोड़ा ध्यान करना है, या फिर सिटिंग पोस्चर हमें सही करना है, या हमें हमेशा सत्य का अनुसरण करना है, ये सारी चीजें, ये all these good qualities which we add in ourselves is called योग. अगर पतंजलि के अनुसरण से हम देखें तो योग का मतलब है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यानी कि मन या चित्त की वृत्तियों को सर्वथा रोक जाना ही योग है. In this way, we can say that yoga is an invaluable gift. Yoga is essentially a spiritual discipline based on an extremely subtle science, which focus on bringing harmony between mind and body, thoughts and action, and harmony between man and nature, and a holistic approach to health and well-being. The practice of yoga leads to the union of individual consciousness with the universal consciousness. So, ये सारी हमने जो जितनी भी परिभाषाएं, जितनी भी हमने योगा के बारे में हमने जो अभी सुना, इसके बाद हम आते हैं कि व्हाट इज द एम ऑफ योग. ठीक है, योग का परम लक्ष्य है समाधि, मोक्ष की प्राप्ति. गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित होकर कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है. समत्व का मतलब है दुख सुख को समान मानना. अब ऐसा योग में क्यों कहा गया है?
The system of yoga is so called because it teaches the means by which the Jivatma can be united to or be in commune with the Paramatma and so secure liberation, moksha. According to Lord Krishna, a lamp doesn't flicker in a place where no winds blow. So it is with a yogi who control his mind, intellect, and self and being observed in the spirit within him. और जब ये स्थिति हमें मिल जाती है, एक योगी जब ये स्थिति को प्राप्त करता है तो वो परम आनंद की स्थिति में चला जाता है और उस स्थिति के बाद दुख सुख उसके लिए कोई मायने नहीं रखता और वो हमेशा एक आनंद की स्थिति में ही रहता है. इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि योगा का परम लक्ष्य समाधि प्राप्त करना है. ठीक है, और अब हम ये समझेंगे कि किस तरह से योग हेल्प करता है इस परम लक्ष्य को प्राप्त करने में. अकॉर्डिंग टू पतंजलि, there are 8 stages of योगा जो कि एक सोल को, एक आत्मा को धीरे धीरे प्रिपेयर करते हैं परमात्मा तक जाने में या फिर परमात्मा से मिलने में. ये 8 जो स्टेजेस हैं, जो 8 अंग योगा के कहलाते हैं, जिन्हें की अष्टांग योग के नाम से भी जाना जाता है, वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि. इन सब को फॉलो करने से धीरे धीरे इंसान अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है. वो किस तरह से? यम और नियम controls the yogi's passion and emotions, keeps him in harmony within his fellow man. यम और नियम के रेगुलर प्रैक्टिस से योगी अपनी जीवन शैली को सुधारता है और धीरे धीरे उसके कर्म इतने अच्छे होते चले जाते हैं कि एक आत्मा पर अनजाने कर्मों का बोझा कम होता चला जाता है और वो अपने कर्मों से हल्की होती चली जाती है. द थर्ड स्टेज इज आसनास. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, आसन्स करने से हमारा शरीर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, निरोगी हो जाता है. और एक योगी को एक निरोगी काया इसीलिए चाहिए होती है ताकि वो अपना पूरा ध्यान भक्ति में लगा सके और भक्ति के दौरान उसका पूरा शरीर उसका साथ दे सके, ताकि कि कोई भी अड़चन ना आए और ना ही उसका ध्यान भटके. और इस तरह से आसना कीप्स द बॉडी हेल्दी and strong and in harmony with nature. Finally, the yogi becomes free of body consciousness. He conquers the body and renders it a fit vehicle for the soul. और इस तरह से आसनों के द्वारा जब बॉडी पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो जाती है तो वो हमें भक्ति के लिए हमारा साथ देने लगती है और उस समय हमारे पूरे शरीर में कोई भी दर्द नहीं होता. ठीक है, इस तरह से आसनास हेल्प करते हैं हमें एक योगी को अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने में. जब भी एक योगी साधना करता है तो वो अपनी काया से ऊपर उठ जाता है और ये आसन के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है. इस तरह से जो ये फर्स्ट 3 स्टेजेस हैं, यम, नियम और आसना, ये कहलाती है बहिरंग साधन. यस सर. People are asking they want to see you. Can you open your radio, please? Okay, sure, sir. Is there any problem? Then no, if you have got a No, problem, then no, leave it. not at all, sir. Not at all. Yeah. Okay, sir. Am I visible? Yeah, you're. Okay. So in this way, yam, niyam, and asanas, these are called bahiranga sadhana. After this, we come to the pranayam and pratyahar. The next 2 stages, pranayam and pratyahar, teach the yogi to regulate the breathing and thereby controls the mind. And this helps to free the senses from the desires. And these 2 stages of yoga are known as the inner quest, यानी कि अंतरंग साधना. अब हम देखेंगे कि किस तरह से प्राणायाम और प्रत्याहार again help us to achieve the utmost
aim of the yoga. What is pranayam? प्राण प्लस आयाम. प्राण यानी कि वाइटल एनर्जी, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं. हम उसको श्वास कह लें या फिर वाइटलिटी कह लें, हमारा एनर्जी कह लें या लाइफ कह लें. ठीक है. आयाम मीन्स एक्सपेंशन, यानी कि हमारे प्राणों को आयाम देना, प्राणों को फैलाना इज कॉल्ड प्राणायाम. नाउ हाउ प्राणायाम हेल्प्स? प्राणायाम कंट्रोल्स आवर ब्रीथ. ठीक है. ब्रीथ में क्या आता है? इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड रिटेंशन, यानी कि कुंभक की स्थिति जिसमें ना हम इनहेलेशन करते हैं ना एक्सहेलेशन करते हैं. धीरे धीरे योगी जब प्राणायाम करता है, धीरे धीरे उसकी ब्रीथ पे उसका कंट्रोल आता है. और जैसे जैसे ब्रीथ हमारे कंट्रोल में आती है, धीरे धीरे हमारा माइंड भी हमारे कंट्रोल में आता है. यू नो, ब्रीथ एंड माइंड बोथ आर वाइस वर्सा. जैसे जैसे ब्रीथ शांत और दीर्घ होती चली जाती है, वैसे वैसे ही हमारा मन, हमारा दिमाग शांत होता चला जाता है और स्थिर होता चला जाता है. और वो जैसे जैसे हमारा दिमाग शांत होता है, ठीक है, उसकी जो फ्लिकरनेस है, जो अशांत मन है, वो हमारे कंट्रोल में आता रहता है और उसकी डिजायर्स कम होती चली जाती है. और जैसे कि हम जानते हैं, जितना ज्यादा दिमाग शांत होगा, उसकी जो डिजायर्स होगी वो कम होंगी. हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो सुदृढ़ होता चला जाएगा. और वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि हमारी एकाग्रता बढ़ती जाएगी. और इस तरह से प्राणायाम हमारे दिमाग को शांत करता है. और शांत दिमाग ही सबसे बड़ी एक रिक्वायरमेंट होती है भक्ति के लिए, ध्यान के लिए. ठीक है. इस तरह से प्राणायाम हमें हेल्प करता है. अच्छा, अगर साधना की दृष्टि से देखें तो व्हाट इज प्राणायाम? आई वुड लाइक टू गिव वन, एक परिभाषा देना चाहूंगी मैं आपको. The emptying the mind of the whole of its illusion is the true exhalation. ठीक है. पूरे दिमाग से सारे विचारों को निकाल देना is a true exhalation. And the realization that I am Atma is a true inhalation. And the steady sustenance of the mind on this conviction is true kumbhaka. And this is pure pranayama. Every living creature unconsciously breathes the prayer, so hum, so hum. That means he, I am a true immortal spirit. And with each inward breath, right? हर एक श्वास जब हम लेते हैं, इनहेलेशन के साथ हम क्या उच्चारण करते हैं? अनकॉन्शियसली करते हैं, जिसका कि हमें ध्यान भी नहीं होता. सो हम, मैं एक आत्मा हूँ. And so also with the each outgrowing breath, creature prays हम सह, यानी कि I am he, मैं परमात्मा हूँ. He offers up the very breath of his being to the Lord. और इस तरह से प्राणायाम हमें आगे बढ़ाता है मोक्ष की तरफ. अब हम आते हैं प्रत्याहार. हाउ प्रत्याहार हेल्प्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रत्याहार? हमारे जितने भी सेंसेस हैं वो भौतिकता की तरफ आकर्षित हुए रहते हैं, यानी कि हमारा पूरा ध्यान बाहर की दुनिया की तरफ है. हमारी आंखें बाहर की दुनिया को देखती हैं, हमारे कान बाहर की आवाजों को, संगीत को, जो दूसरे लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं, उसको सुनते हैं. ठीक है. हमारे जितने भी सेंसेस हैं वो बाहरी दुनिया की तरफ फैले हुए हैं. प्रत्याहार के थ्रू हम हमारे सारे सेंसेस को अंदर की तरफ मोड़ते हैं. ठीक है. अंतर की तरफ मोड़ने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है. ठीक है. जैसे कि बाहर की आंखों को जब हम अंतर की तरफ मोड़ते हैं तो उसका एक जो मोटो होता है, जो एक लक्ष्य होता है, वो क्या होता है? अंतर के प्रकाश को देखना. ठीक है. अंदर, हमारे शरीर के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है. जैसे जैसे प्रत्याहार की प्रैक्टिस से हम अंतर्दर्शी होते जाते हैं, हम पूरे ब्रह्मांड को देख पाते हैं साधना के थ्रू. अंतर में जो अल्टीमेट एक प्रकाश है, जो हमारे ज्योति केंद्र में चमक रहा है 24 घंटे, उसको हम देख पाते हैं प्रत्याहार की प्रैक्टिस के दौरान. और बाहर हमारे कान जो बाहर की ध्वनि को सुनते हैं, जब वो प्रत्याहार के दौरान अंतर्दृष्टि अंदर की तरफ हम उनको जब लीन करते हैं,
तो हमारे अंतर में जो घंटे की धुन 24 घंटे हमारे अंदर चल रही है, उसको सुनने में हम सक्षम हो पाते हैं। तो प्रत्याहार के द्वारा, प्रत्याहार की प्रैक्टिस हमें अंदर की तरफ मोड़ती है, ताकि हमारे अंदर में जो खजाना है, उसको, जो ट्रेजर है, हम उसको देख पाए और सुन पाए। ठीक है। इसके बाद आता है धारणा, ध्यान एंड समाधि। ये लास्ट के जो 3 अंग हैं, वो बहुत ही मायने रखते हैं हमारे लिए। धारणा का मीन्स है, धारणा इज होल्डिंग द माइंड टू वन प्लेस, ठीक है, वन ऑब्जेक्ट। और एक पॉइंट पे आके जब हम हमारे ध्यान को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड धारणा। ठीक है। धारणा धीरे धीरे हमें हेल्प करती है कंसंट्रेशन को लाने में, एकाग्रता की तरफ बढ़ाती है धारणा। ठीक है। When the body has been tempered by asanas, when the mind has been refined by the fire of pranayama, and when the senses have been brought under control by pratyahar, the sadhaka reaches the 6th stage called dharna. Here he is concentrated wholly on a single point or a task in which he completely engrossed, यानी वो लीन हो जाता है एक पॉइंट पे, और उस वक्त द माइंड हैज टू बी स्टिल इन ऑर्डर टू द स्टेज ऑफ कंप्लीट एब्सॉर्प्शन। प्लीज okay, shall I continue? And in that point, the sadhaka concentrate upon Om, which is the true symbol of divinity, to achieve egagrita, and then the yogi focus his attention on his beloved Lord, adding Om to the name of the Lord. और इस तरह से धारणा एकाग्रता को improve करती है. Then comes to dhyan and samadhi. The word dhyan comes from the Sanskrit word dhye. It means to think of. ठीक है। ध्यान की अवस्था में उसे एक योगी को सत्य प्रतीक होता है कि व्हाट इज ट्रुथ एंड व्हाट इज इल्यूशंस। ठीक है। और वो इसमें फर्क महसूस कर पाता है, और उस वक्त उसे पता चलता है कि सत्य क्या है, हमारी आत्मा ही सत्य है, और वो पूरी तरह से उसके कंसंट्रेशन में लग जाता है। राइट। और इस तरह से वो समाधि की अवस्था में चला जाता है। दैट इज द अपमोस्ट टारगेट ऑफ योग। इस तरह से योग के 8 अंग हेल्प करते हैं एक योगी को मोक्ष की तरफ ले जाने के लिए। सो ये मैंने बात की कि किस तरह से योग का लक्ष्य समाधि प्राप्त करना है, और किस तरह से योग हेल्प करता है समाधि को पाने के लिए। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगी कि किस तरह से योगा हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हमें हेल्प करता है। ठीक है। आजकल जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है स्ट्रेस। ठीक है। आजकल की भौतिकता की दौड़ में हर एक इंसान अपने कुछ न कुछ लक्ष्य लेके चलता है और उन्हें पूरा करने की दौड़ में लगा हुआ है। कई बार हर इंसान कोई इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है, कोई नहीं भी कर पाता है, और कोई बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है। ये सारी चीजें स्ट्रेस को पैदा करती है, एंड स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए, वो हम सभी जानते हैं। ठीक है। स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस यानी कि क्या होता है, दबाव, एक प्रेशर। ठीक है। जब हमारा दिमाग या फिर हमारा पूरा शरीर स्ट्रेस को झेल रहा होता है, तो क्या होता है, हमारी जितनी भी वेसल्स है, ब्लड वेसल्स हैं, वो स्ट्रेस की वजह से दब जाती है, संकीर्ण हो जाती है, और उस वजह से हमारा पूरा जो ब्लड है, जो ब्लड वेसल्स में दौड़ रहा होता है, वो रुक जाता है। क्योंकि अगर मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे कि एक पाइप होता है, ठीक है, जिसके थ्रू पानी का प्रवाह होता है। ठीक है। अगर वो पाइप को हम खींच देते हैं, तन देते हैं, तो उसका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है, जिस वजह से पानी जिस स्पीड से जाना होता है वो नहीं जा पाता है। यही होता है हमारी ब्लड वेसल्स के साथ। एक स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से जितनी भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं, हमारी मसल्स हैं, वो तंग जाती है। ठीक है।
और जो हमारा ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है या फिर वो बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ता है, जिससे कि हमारे पूरे शरीर में हर एक सेल तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है या फिर वो कम मात्रा में पहुंचता है। और इस यही एक रीजन है कि वो अनगिनत रोगों का कारण बन जाता है। ठीक है, हम हमारे पूरे बॉडी में हमें पेन महसूस होता है। ठीक है, और उसकी वजह से हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। हमारा बॉडी जो है वो सेल से बना है। ठीक है, और सेल का सबसे बड़ा जो कह देते हैं पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं ब्लड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और जब ब्लड ही पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहा है तो वो जो हमारे सेल्स की कार्य प्रणाली है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, और हमारे सेल्स वीक हो जाते हैं। उसकी वजह से सेल्स जब वीक होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, बिकॉज इफ अवर सेल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ तो उसकी फाइट करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। और यही रीजन होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इस वजह से कई बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती हैं। तो योगा हमें हेल्प करता है स्ट्रेस को कम करने में। और दूसरा पॉइंट होता है हमारा पूरा जो कार्य प्रणाली है, जो हमारा शरीर फंक्शन कर रहा है वो हार्मोन्स की वजह से करता है। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर के जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। और इसी वजह से थायराइड, डायबिटीज, इतनी अनगिनत बीमारियां हमारे शरीर को लग जाती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हाउ स्ट्रेस हाउ योगा हेल्प्स टू स्ट्रेस को कम कैसे करता है। अच्छा, जब भी हमारे शरीर में स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है तो एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा होता है या फिर सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है जितना ज्यादा कॉर्टिसोल होगा उतना ही थायरॉक्सिन लो हो जाता है, जिससे कि हमें थायराइड इश्यूज होते हैं। और टेस्टोस्टेरोन जो कि एक और हार्मोन है वो भी कम मात्रा में सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में फैटिक और टायर्डनेस हमेशा हम फील करते हैं। हायर कोर्टिसोल की वजह से DHEA एक हार्मोन है वो भी कम हो जाता है, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम कम हो जाता है। ठीक है, अब जो योगा है, योगा की वजह से जब हम आसनास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम की वजह से जितना ज्यादा ब्रीथ हमारा शांत होता है, दीर्घ होता है, उतना ही जब हमारा दिमाग शांत होता है तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो लो होता चला जाता है, हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता जाता है। और स्ट्रेस लेवल जैसे जैसे कम होगा, कॉर्टिसोल कम होता है, और हमारी जितनी भी बीमारियां हैं, थायराइड है, डायबिटीज है, और भी जितनी भी प्रॉब्लम्स है हमारे शरीर में वो बैलेंस होती चली जाती है। क्योंकि दिमाग जब शांत होता है हमारे हार्मोन्स बैलेंस होते चले जाते हैं, और धीरे धीरे ये जो डिजीज है वो कंट्रोल में आने लगती है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए कौन कौन से आसन होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं। सबसे पहले है ताड़ासन, नौकासन, शशांक आसन, योग मुद्रा और कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग यानी कि योग निद्रा जिसको हम बोल सकते हैं। ये सारी चीजें मेडिटेशन, जिससे कि हमारे ब्रीथ को हम कंसंट्रेट करते हैं और दिमाग में जितने भी विचार आते हैं उनसे हम अपने दिमाग को हटाकर पूरा कंसंट्रेशन ब्रीथ पे लाते हैं। इससे क्या होता है कि दिमाग में विचार तो आ रहे होते हैं लेकिन हम अपने दिमाग को डाइवर्ट कर देते हैं ब्रीथ पे, कंसंट्रेट कर देते हैं ब्रीथ पे, और उस वजह से हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है। और इस तरह से हमारी जो रेगुलर प्रैक्टिस है ब्रीदिंग की, उससे स्ट्रेस लेवल हमारा धीरे धीरे कम होता है और बैलेंस होता चला जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया डायबिटीज पेनक्रियास की वजह से होती है। पेनक्रियास हमारे शरीर में ग्लैंड्स होती हैं जो कि इंसुलिन नामक हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। अब जब पेनक्रियास किसी भी कारणवश ज्यादा स्ट्रेस की वजह से, ज्यादा टेंशन की वजह से, गलत कार्य प्रणाली की वजह से काम करना बंद कर देती है तो जो इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है।
इंसुलिन जब इम्बैलेंस होता है या कम मात्रा में होता है, तो हमारे शरीर में जो भोजन के पचने की वजह से जो ग्लूकोज की मात्रा रक्त में होती है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। अब अतिरिक्त मात्रा ग्लूकोज की जब एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, तो उससे क्या होगा, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है वो ज्यादा मात्रा में होगा, और यही डायबिटीज कहलाता है। ठीक है। योग आसनास की वजह से कई आसनास हैं योगा में, जैसे कि वक्रासन हो गया, पश्चिमोत्तानासन हो गया, जानुशिरासन हो गया। ठीक है। इन सब की वजह से सूर्य नमस्कार, कपाल भाती जो कि शुद्धि क्रिया है, उन सब की प्रैक्टिस से धीरे धीरे पेनक्रियास की कार्यप्रणाली इंप्रूव होती है, और वो जो हार्मोन सीक्रेट करती है इंसुलिन, उसकी मात्रा धीरे धीरे बैलेंस होती चली जाती है, इंप्रूव होती चली जाती है। और इन सब की वजह से धीरे धीरे फिर से हमारे रक्त से जो अतिरिक्त शुगर है, जो ग्लूकोज है, वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, और हमारे डायबिटीज कंट्रोल में आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, योगा, आसना, प्राणायाम और मेडिटेशन से हम अपने शरीर को फिर से बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं। हमारे शरीर में हार्मोन्स की मात्रा को बैलेंस कर सकते हैं। मेडिटेशन से हमारे दिमाग को शांत कर सकते हैं। प्राणायाम के थ्रू हम अपने दिमाग को ब्रीथ के साथ जोड़कर उसको शांत कर सकते हैं। हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनको शांत कर सकते हैं, उनको नॉर्मल कर सकते हैं, उसके स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं, और धीरे 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 हमारे पूरी बॉडी को, हमारे एक एक सेल्स को हम रीजनरेट कर सकते हैं, और धीरे धीरे हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होता चला जाता है। और जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारा शरीर जब हमारा साथ देने लगेगा, तभी हम या एक योगी भक्ति कर सकेंगे, मेडिटेशन कर सकेंगे, और हमारा जो परम लक्ष्य है योग का, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का, ठीक है, तभी हम वो भक्ति कर सकेंगे विदाउट एनी डिस्टरबेंस, विदाउट एनी रोग, निरोगी काया। ठीक है। निरोगी काया से हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। सो हालांकि कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन टाइम बाउंडिंग की वजह से मैंने हर एक एस्पेक्ट को बहुत शॉर्टली आपको समझाने की कोशिश की है। सो मेरे ख्याल से मैं जो कहना चाहती हूँ योग के बारे में, वो थोड़ा बहुत मैं क्लियर कर पाई होंगी। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। धन्यवादः. Now, anybody would like to ask questions? Come forward. Thank you very much, Richa ji. You have done a good speech to us. Thank you. And the Patanjali Yoga Shastra explained very well. And we expect people have got the message of this Yoga Shastra, what you try to explain and how it helps to the people. So now, please, experts can give their opinion, and other people who have got doubts can they may ask their doubts. Namaskara. I got One second, please raise your hand so that I can call one by one, please. Who is Raghavaji? Raghavaji, please stop. I am Raghava Rachuri. Ma'am, thanks for your presentation. I think you have made presented a paper actually. Is it possible to share it with us if it is not a problem for you, so that we can refer it whenever we need to? Pardon me, I couldn't understand. Sorry. So you wanted to share the paper. The video is being recorded here now. That recorded video you can see in YouTube, and all people can see the YouTube videos. And Veda Samskruti name, it is being published. The video immediately within a day or two. You can things regarding paper. We are trying to digitize and make it as a souvenir. So when it comes, we will publish it. Okay. We can refer it because there is a lot of good information. For the people of our purpose is to propagate to all people only, not to hide with us. So we will try to publish as soon as possible. Thank you. The website name you told, what is the link?
Veda Samskruti Samiti in YouTube. Veda Samskruti Samiti. Thank you. Please give your phone number and name, etc. there in the chat box, so that we will add you in our group. And there are 50 papers now we received. We have received total 50 papers. Now it is only 8th paper now. Another 42 papers are to be presented. You can see all those messages every week. It will be presented on Sunday morning at 9:45 onwards. You can come and see the papers, and the papers wise souvenirs will be presented, or digital souvenir will be published. Then you can see. So, meanwhile, we please attend and subscribe our videos when YouTube issue, when you see in YouTube. I request everybody to see the YouTube videos and subscribe them, so that you will get future videos also immediately on publication. Now, Meenakshi, please. Good morning, Andy. Good morning. And ma'am, good morning. Very good morning, ma'am. Yeah, I am very impressed with your statements and the paper presentation and everything, regarding yoga. And I have one question, ma'am. Yes, ma'am. How to get rid of this negative thoughts from the children nowadays? All the children in the schools, wherever we see, what as per my observation, children are always in negative thoughts and comparing with others. I am unable to do this. I am not only children, even the elders also feeling in that way. Some people. So in yoga, with the yoga, it is possible, and yes, how yes. far it is possible? Please explain. Yes, sure. सबसे पहले तो जो ऑटो सजेशंस होते हैं, राइट, जिनको हम बोलते हैं अनुप्रेक्षाएं या ऑटो सजेशन, इट वर्क्स अ लॉट. लाइक जैसे डेली बच्चों को आफ्टर प्रेयर सबसे पहले तो ओम का उच्चारण करना चाहिए विद ज्ञान मुद्रा. देयर आर लॉट ऑफ मुद्रास व्हिच गिव like motivation and determination to each and everybody, like Gyan Mudra, and it gives a very positive vibration, and it ये हमारे दिमाग को भी बहुत तेज करती है. दूसरा, ऑटो सजेशंस, पॉजिटिव सजेशंस बहुत ज्यादा काम करते हैं. जैसे कि बच्चों को डेली ये रिपीट करवाना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, एंड मैं निरोगी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, I can achieve anything in my life, and I will definitely complete my aim or goal in my life. ये बार बार जब हम ऑटो सजेशंस बच्चों को देते हैं तो उससे क्या होता है, और रिपीट करने के लिए जब बोलते हैं तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है धीरे धीरे ये ऑटो सजेशंस को ग्रैस्प करता है. सी, वी हैव कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड. ठीक है, कॉन्शियस माइंड तो डेली रूटीन में जो हम लोगों को साथ देता है, जो हमारा दिमाग जिसको हम बोलते हैं, इट वर्क्स 24/7, राइट. जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या करता है, ऐसी चीजों को ग्रैस्प करता है जो जाने अनजाने में हम कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम सचेत नहीं होते हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उनके प्रति बहुत ज्यादा सचेत होता है. तो जो हम अपने आप को रिपीट करते हैं, जो विचार हमारे दिमाग में रात दिन चलते रहते हैं, वो उन्हीं को ही रिकॉर्ड करता है और उन्हीं पे ही काम करता है. तो सबकॉन्शियस माइंड तक पॉजिटिव थॉट्स को पहुंचाने की एक ही ये प्रणाली है कि बच्चों को, चाहे बच्चे हो या बड़े, हर एक योगा सेशन के बाद में ओम का उच्चारण करने के बाद ये ऑटो सजेशंस रिपीट करवाए जाए 3 बार. डेली का ये प्रोसेस होना चाहिए, और धीरे धीरे ये ऑटो सजेशंस अपने आप ही उनके आचरण में झलकने लगेंगे और काम आने लगेंगे. और ऐसी कई मुद्राएं भी हैं जो कि इस तरह से काम करती है, जैसा कि फर्स्ट है ज्ञान मुद्रा, ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज दिस हकीनी मुद्रा ऑल्सो, राइट. ये जो मुद्रा है वो बहुत ही पावरफुल होती है, जो कि हमें हमेशा पॉजिटिवनेस की तरफ बढ़ाती है. अगेन देयर इज वन बेस्ट मुद्रा, कालेश्वर मुद्रा. दिस इज लाइक कालेश्वर मुद्रा. यू कैन नोट डाउन द नेम ऑल्सो. दिस कालेश्वर मुद्रा, ये हमारे जो थॉट्स हैं, जो अनगिनत थॉट्स हैं, उनको स्टॉप करती है, उन पे रोक लगाती है.
और जो नेगेटिविटी है, जैसे अगर हमारे दिमाग में हमेशा नेगेटिव विचार ही चल रहे हैं तो वो उनको स्टॉप करती है, उन पे रोक लगाती है और हमें हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशन की तरफ हमें बढ़ाती है। सी, अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम्स की तरह ही सोचते जा रहे हैं तो हम किसी भी समाधान की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा यही होगा कि हम जब अपनी उस थॉट प्रोसेस को रोककर उनके समाधान की तरफ सोचना शुरू करें एक नई दिशा में, तो ही हम पॉजिटिव थॉट्स हमारे अंदर ला पाएंगे और उस समस्या को दूर कर पाएंगे। तो दिस कालेश्वर मुद्रा आल्सो हेल्प्स अ लॉट इन दिस प्रोसेस। सो ऑटो सजेशन, पॉजिटिव थॉट्स विल हेल्प यू डेफिनेटली। उसके अलावा सर्वांगासन है, शीर्षासन है, जो कि हमारे न्यूरॉन्स तक ब्लड को सर्कुलेट करते हैं। तो सी, जैसे जैसे हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, उनका जो सोचने का मेथड है वो बहुत ही ज्यादा तीव्र होता है। उससे क्या होगा, हम एक ही चीज पे अटके नहीं रहेंगे, हम हमेशा अपने विचारों को नई दिशा में गति दे पाएंगे। Thank you. Sudha, Thank you, ma'am. Thank you very Sudha much. Bhimarao. Yeah, Sudha Bhimarao, please. Sudha Bhimarao, please. Namaskaram. नमस्ते मैम। Thank you very much, ma'am, for that comprehensive presentation. I have one doubt. Usually they say it's ideal to do yoga in the morning. Supposing we skip that on that day, any other time can we do? यस मैम, एक्चुअली वैसे तो देखा जाए तो मॉर्निंग का टाइम बेस्ट रहता ही है, लेकिन अभी हमारा लाइफ स्टाइल है बिल्कुल चेंज हो गया है। जो पुराने जमाने में या फिर जो सतयुग की बात हम करें और अभी जो कलयुग चल रहा है, तो मतलब बिल्कुल ही ऑपोजिट है सब कुछ। तो ऐसा नहीं है कि अगर मॉर्निंग में हमारा स्किप हो गया है तो हम पूरे दिन में कभी भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना पॉसिबल हो सके बंद रूम में या एसी रूम में नहीं करना चाहिए। यू कैन गो टू टेरेस पे आप कर सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं। थोड़ा सा एटमॉस्फेयर खुशनुमा और मतलब नेचुरल होना चाहिए। और प्राणायाम भी जहां तक हो सके मॉर्निंग में करना चाहिए, क्योंकि इवनिंग में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है। प्राणायाम इज टोटली रिलेटेड टू ब्रीथ। तो हो सके तो प्राणायाम मॉर्निंग में करना चाहिए, लेकिन अगर मजबूरी है तो हम लोग कर सकते हैं इवनिंग में। आसनास कभी भी कर सकते हैं, प्राणायाम प्रेफरेबल इज मॉर्निंग। Okay, ma'am. And one more thing, like meditation पे बैठते लेकिन mind में पूरे all negative and dirty thoughts आते, madam. फॉर दिस प्राणायाम इज बेस्ट। प्राणायाम होता ही इसलिए है दिमाग को शांत रखने। ठीक, मैं एक टेक्निक बताती हूँ, ठीक है। जब हम प्राणायाम करें, यानी कि सबसे पहले हमने किया अनुलोम विलोम और डीप ब्रीदिंग, ठीक है। ये दो अंग है प्राणायाम के, ठीक है। प्राणायाम में और भी चीजें आती है, लेकिन जो दो मेन है वो है डीप ब्रीदिंग और अनुलोम विलोम, ठीक है। अब जैसे हमने की दीर्घ श्वास लिया, लंबा गहरा सांस लिया, हमने लंबा गहरा सांस छोड़ा, तो हम पूरा ध्यान ब्रीथ पे रखेंगे कि मैंने लंबा गहरा सांस लिया, लंबा गहरा सांस छोड़ा। देन अगेन मैंने लंबा गहरा सांस लिया, लंबा गहरा सांस छोड़ा। पता है इससे क्या होता है, हमने हमारे दिमाग को डाइवर्ट कर दिया, उसको एक होमवर्क दे दिया कि नहीं चल तू अभी ब्रीथ को देखेगा। राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग विथ ईच ब्रीथ, वी आर सीइंग आवर ब्रीथ, हमारा कंसंट्रेशन ब्रीथ पे है। तो क्या हुआ, हमारा दिमाग कहाँ अभी ऑक्यूपाई हो गया, ब्रीथ पे। उस दौरान भी हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त हमारा ध्यान विचारों पे नहीं है, हमारा ध्यान है पूरा ब्रीथ पे। तो दैट इज द टेक्निक। हम अपने लगातार आने वाले विचारों को कैसे रोक सकते हैं, रोकना भी नहीं है, सिर्फ हमारा ध्यान डाइवर्ट करना है ब्रीथ पे। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी ये प्रैक्टिस बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली आपका ध्यान एकाग्र होता चला जाएगा। ओके With your permission, Richa ji, can I just add a point here? यस सर। Yeah, Sudha madam, whatever she had asked, if you have got to do it any other point of the time in the day, Yeah. then the stomach should be empty. Means at least the digestion should have happened for whatever food you have taken. Yeah. It is about at least 4 hours, you should keep the gap. Yes. Once you have taken some food, that's important.
बहुत जरूरी है। हाँ, थैंक यू। ये नमस्ते महोदया। नमस्ते। जी, आपका विषय इतना सुंदर और प्रैक्टिकेबल है कि सबके लिए बहुत अच्छा विषय आपका रहा है। तो मैं आपने कुछ बताया था कि टेंशन रिलीज के लिए कुछ योग आपने बताया था, आसन। यस मैम, यस तो मुझे और एक बार सुनना था, ताड़ासन के बाद में आपने क्या बताया था एक बार? हाँ, यस, यू कैन नोट डाउन। हाँ। ताड़ासन, नौकासन, नौकासन, अच्छा। या शशांकासन। कौन सा? शशांकासन। ये शशांकासन। Yeah, you can Google and you will you will get the pictures and you will also come to the process how to do these asanas. मैं आपको नाम बता देती हूँ and आप Google पे सर्च कर सकते हैं how to do these asanas, right? Then next is योग मुद्रा. अच्छा, हाँ. सर्वांगासन. हाँ. And शीर्षासन is also there, लेकिन शीर्षासन टीचर की देखरेख में ही करना है, ठीक है? शीर्षासन सबसे लास्ट स्टेज है, मतलब एकदम परफेक्ट जब आप हो जाओगे सारे आसनास में, उसके बाद टीचर्स की देखरेख में ही आपको शीर्षासन और सर्वांगासन करना है, और बाकी के ये आसनास आप कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, हाँ. उसके अलावा प्राणायाम में आप दीर्घ श्वास करेंगे, यानी कि डीप ब्रीदिंग एंड अनुलोम विलोम, हाँ, ठीक है? ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे स्ट्रेस को कम करने के लिए। उसके बाद आप करेंगे कायोत्सर्ग या योग निद्रा जिसको बोलते हैं ना, मेडिटेशन, वो आप करेंगे, ठीक है? उसके साथ मैं मुद्रा के नाम बोलती हूँ, आपको वो मुद्रा करनी है। कालेश्वर मुद्रा, हकीली मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। ये सारी मुद्राएं स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती हैं। अच्छा, ठीक है? एक और नाम आप जोड़ सकते हैं, खेचरी मुद्रा। खेचरी, अच्छा। हाँ, आप डिटेल सब जान पाएंगे, गूगल कर सकते हैं आप। खेचरी मुद्रा बहुत ही बेस्ट होती है, वो तुरंत ही अपने विचारों को रोकती है। तो ये सारी मुद्राएं आप कर सकते हैं प्राणायाम के दौरान, जैसे आप लंबा गहरा श्वास ले रहे हैं, दीर्घ श्वास कर रहे हैं, आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, ठीक है? या फिर आप भस्त्रिका कर रहे हैं, ठीक है? या फिर जस्ट आप बैठे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आपके दोनों हाथ फ्री हैं, at that time also you can engage your both the hands to these mudras. So ये मुद्राएं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। आप दिन में 2-3 बार 15-15 मिनट के लिए कर सकते हैं। Initially you can start with 5 minutes also. जी, और एक बताया था कि and there is one, yes, थायराइड के लिए भी आपने कुछ बताया था। हाँ, थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है योगा में। सबसे पहले तो मैं उसके आसनास आपको शेयर करना चाहूंगी। यू कैन नोट डाउन देम। थायराइड के लिए सबसे पहले आप करेंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन, जी। यस, देन उष्ट्रासन, देन यू कैन गो फॉर दिस सर्वांगासन, जी, हलासन, हाँ, ठीक है? ये और सिंहासन इज ऑल्सो देयर। अच्छा, ठीक है? ये जितने भी आसनास हैं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे थायराइड को नॉर्मल करने में, क्योंकि आप देखेंगे जब आप ये आसन करेंगे ना, तो सारा प्रेशर आपका गले पे आएगा। यहाँ पर थायराइड ग्लैंड्स होती हैं जो कि थायराइड हार्मोन सीक्रेट करती हैं। सो यू कैन कंट्रोल रेगुलेट योर थायराइड विद देम। और इसके लिए ये भी जरूरी है कि आपका स्ट्रेस लेवल नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि थायराइड का सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है स्ट्रेस से। तो स्ट्रेस से रिलेटेड भी जितनी भी आसन मुद्राएं मैंने बताई हैं, वो इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगी थायराइड को रेगुलेट करने में, ठीक है? और अभी जो मैंने आसनास बताए वो डायरेक्ट थायराइड के लिए है, ओके? और थायराइड के लिए यू कैन गो फॉर उज्जयी प्राणायाम। The best pranayam for Ujjayi, this thyroid, Ujjayi pranayam, you can note down. हाँ, ठीक। Okay, and mudra, Sahaj Shankh mudra. You can go for Sahaj Shankh mudra.
जी. Shivling Mudra, हम्म. and Pran Mudra. ठीक है. Okay. थैंक यू मैम. हाँ, धन्यवाद. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपको. आपके पेपर you, में sir. ये सब है क्या, इंक्लूड है ये सब मुद्रा? हाँ, ये मेरे पेपर में काफी चीजें इंक्लूड हैं. जो मैंने इसमें डिजीज ली है वो है, सबसे पहले तो स्ट्रेस लिया है, देन डायबिटीज इज देयर, देन इम्यून सिस्टम को कैसे पावरफुल करते हैं वो भी है इसमें. आई थिंक थायराइड मैंने इंक्लूड नहीं किया है, बट थोड़ा सा आपको बोलने में आया था वो, इसीलिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा था. हाँ, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया था. तो आप थायराइड को भी इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं. जी जी, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. हरि ओम. अहं स्वप्नलता वदन्ती अस्मि महोदय. हरि ओम. हरि ओम, नमस्ते. आमां. आपने जो अभी विषय प्रस्तावित किया उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ. बहुत ही. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. ओके, नाउ सद्विद्यानंद जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नमस्कार. नमस्कार मैम. Namaskar. I want to add 2-3 things. One thing is that what Bhagavad Gita, Yoga, Karma, Kaushalam. Yes. In that, if we take only as a Kaushalam, as an expertise, then there is a problem. So in Taittiriya Upanishad, it says Dharman pramaditavyam, Kushalan pramaditavyam. So there we should not have any kind of indifference towards the dharma, and also indifference towards the kaushalam. Kaushalam there means that we have to be very careful about how we act, how we talk, because only if we say kaushalam, then our Dawood Ibrahim is the also karma yogi, because he is expert and not getting caught by the Indian government. So if kushalta only we take as a literal things, then Dawood Ibrahim also become karma yogi, and therefore Kaushalam means that what kind of the action we are selecting in our life, what kind of the way of life we are proceeding, that is what the Kushalta is. That means how we select our action, our speech, our goal of life, that is called Kaushalam. Yeah. Ma'am, can I say one point, please, Yes. with your permission? Yes. See, you gave the example of Dawood Ibrahim. See, he was a yogi, right? But still, what he was doing negative things, right? So, yogas karmas kaushalam. It means कि हमारा ध्येय तो मोक्ष प्राप्ति है, ठीक है? तो हमारा हर एक कर्म ऐसा होना चाहिए कि जिसकी वजह से हम अपने कर्मों का बोझा बढ़ाए नहीं अपनी आत्मा पर. सी, जितनी ज्यादा हमारी आत्मा लाइट होगी, कर्मों का बोझ जितना कम होगा, वो उतना ही जल्दी और इजीली मोक्ष प्राप्ति की तरफ अग्रसर होगी. सी, तो इसी वजह से गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि कृष्ण तुम योगी बन जाओ, या सॉरी अर्जुना तुम योगी बन जाओ, यानी कि तुम्हारा हर एक कर्म एक योगी की तरह कुशलता पूर्वक किया हुआ होना चाहिए, जिससे कि तुम्हारा हर एक जो कर्म है वो पॉजिटिव हो, राइट? जिसकी वजह से मतलब बस हमारे कर्मों का बोझा कम होने के बदले बढ़ना नहीं चाहिए. So I think this point can help us to achieve moksha sooner or very easily. Like, I agree with you. What you say, I don't agree. It's not a disagreement. But what I'm telling is, whenever we define something, see, we are talking about Vedic knowledge. In Veda, whenever we make any definition of anything, it should not be overwrite in the sense ativ laghavam means we are shortening in the definition, or sometimes we are going outside the definition. अति व्याप्ति उसको कहते हैं. तो अगर आप मात्र कुशलता को ही लेंगे तो वो अति व्याप्ति हो जाएगी, इसलिए मैंने ये दृष्टांत दिया और दाऊद इब्राहिम का. So definition should be such that it should go exactly to the point where you are pointing out.
If you say only expertise or kaushalam, then there is a problem. That is what I wanted to mention. फिर तो एक आम आदमी मतलब प्रयास ही नहीं कर पाएगा, राइट, है ना? नहीं, क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि कौशलम जो है योग का, और भगवान कहते हैं सुकृत दुष्कृते, भगवान ऑलरेडी मेंशन्स दैट धर्म एंड अधर्म. सुकृतम इज धर्म, दुष्कृतम इज अधर्म. So ube dushkrute Bhagwan said already there. So that's why we have to be careful. We have to have a expertise in the choosing the action, dharma and adharma. That is what they mentioned there. Because kushalanna pramaditavyam, that is a Taittiriya Upanishad vakya. And so we have to be very careful when we say any definitions, because ati vyapti will take to anything. Okay, ma'am. That point I wanted to make. And another thing is that if we look into the Patanjali Yoga Sutra, in that there is no mention about the Atma and Paramatma ka milna jo hai, wo wahan par nahi hai. Yeah. It is only about the Nirvikalp Samadhi, and it has not even mentioned. I have already written a Gujarati book on that Patanjali Yoga Sutra. So it has not mentioned about the emptying the mind. That is a new version of the yoga, that is Hatha Yoga and all that. But in originally Patanjali Yoga Sutra, nowhere it is mentioned that our mind has to be emptied out. Actually, if you see the definition of Samadhi, Drashtuhu Swarupe Avasthanam Samadhi. And the flow of the thought is going towards the Atma. So that is where in Nirvikalp Samadhi, we are not even aware about the flow of the thought going towards the Atma. Yes. That is what is Nirvikalp Samadhi. But it is not mentioning about the Atma or Paramatma ka ek hona. That is not mentioned in Patanjali Yoga Sutra. Yeah, Because it is not just let me finish. It has talked about Paramatma as a Ishvara, and Ishvara is a Vishesha Purusha. That is only thing it is mentioned there. And by the anugraha of the Ishvara also, we can have a Samadhi. Ishvara Pranidhanadva Samadhi, that is the Sutra already. So by the total surrender to Ishvara also, we can have Samadhi. But it is not mentioning about the Jivan Ishvara Aikya. Because Ishvara is a Vishesha Purusha, having a no avidya, no klesha, all that is not there in Purusha. So that whole section is there about Ishvara. So we have to say that maybe Hatha Yoga, I have not studied Hatha Yoga, so I cannot say anything about Hatha Yoga. But in Patanjali Yoga Sutra, Atma Paramatma ka milna hai, wo Patanjali Yoga Sutra mein nahi hai. Actually, I have found from Gita. गीता में जैसे कहा गया है और श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि नारद मुनि की डेफिनेशन अगर हम लेते हैं, अकॉर्डिंग टू नारद मुनि आल्सो, the yoga is the union of Atma and Paramatma. No. I'm sorry. No, it's not union. Understand? It is not union. It is a aikya. Jiva and Ishvara are one and the same. That is what mentioned. And what I'm telling you is, in the Patanjali Sutra, it is not mentioned. That is my point. What Narada said, what Bhagavad Gita said is a different totally. But in Patanjali Sutra, Atma Paramatma का ऐक्य नहीं बताया है. That is what नहीं, उसमें सिर्फ बस like अपने चित्त की वृत्तियों को रोकना बताया है, and जो कि अष्टांग योग के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं. Yeah. Okay, I'm done. Okay, thank you so much, ma'am. Okay, I have a question, Mahodaya. Yes. How many hours sleep is the minimum requirement for a healthy body? Pardon me. Please repeat your. To remain healthy, minimum how many hours should a person sleep? कितने घंटे सोने की आवश्यकता है? It depends upon your lifestyle and the quality of the sleep. ठीक है. कोई व्यक्ति जैसे कि सिर्फ 6 घंटे में अपनी नींद पूरी कर लेता है, साउंड स्लीप होती है उसकी, तो ठीक है. और डिपेंड करता है कि आपका जैसे सोने का मतलब क्वालिटी, वही मैं जो बोल रही हूँ, कोई 8-8 घंटे भी सोता है लेकिन अगर साउंड स्लीप नहीं होती है तो भी उसके लिए वो इनसफिशिएंट होता है. तो ऑल इट डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल.
वैसे देखा जाए तो 5 घंटे भी इनफ होते हैं किसी आदमी के लिए, तो किसी के लिए 8 घंटे भी पर्याप्त नहीं होते हैं. So it depends upon you, person to person. It depends on person. लेकिन suppose I will sleep only for 4 hours. Will my body accept that? 4 hours थोड़ा कम हो गया. राइट. I mean, it's not मतलब 5 hours. अच्छा, अगर साउंड स्लीप के अलावा दूसरी चीजों को देखिए, जैसे कि रात को पूरा हमारा जो शरीर है वो रीजनरेट होता है. ठीक है, पूरा जो हमारे जितना भी सिस्टम है वो बैलेंस होता है. तो लाइक उस दृष्टि से मैं बोलना चाहूंगी कि मिनिमम 5 से 6 घंटे मेरे ख्याल से. The local currency. Many times the money changes will definitely cheap them, but they tolerate it. And drinking must. If you go for 4 hours sleep, how do you feel, ma'am? आपको कैसा लगता है जब आप 4 घंटे की नींद लेते हैं तो? Hours. हाँ, नहीं, मैं 4 घंटे नहीं लेती हूँ, but I was just asking you, like it does not depend on what you want to do. Your body should be accepting health wise. तो किसी को बहुत कुछ करना है तो बोलेगा मैं कम घंटे सोता हूँ तो मेरे इतने सब चीजें हो जाएंगी. तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने पढ़ा है और महसूस किया है, मतलब मेरे ख्याल से साउंड स्लीप और उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है. वी कैन गो फॉर दैट ऑप्शन कि जितना ज्यादा हम साउंड स्लीप थोड़े ही घंटे में अगर सो लेते हैं तो हमारा बॉडी को वो पर्याप्त होती है. ऐसा कुछ नहीं है. ये कोई मुझे नहीं लगता कि आप 8 घंटे की नींद ले रहे हैं तभी ही आप फ्रेश फील करेंगे. आई डोंट थिंक सो. मेरे हिसाब से क्वालिटी ऑफ स्लीप मैटर्स अ लॉट. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, now Josna Reddy, would you like to ask? Sir, I am actually from Hyderabad. Sarvebhyo Namaha. Namaskaralu. Namaskar. I have got only small 2 doubts. One is yoga chittavrutti nirodha. This chittavrutti consists of klista, other types also. There are 8 stages suggested by Patanjali. At what stage, what sort of chittavrutti is nirodha, is stopped? This is one question. The other thing is, because this is a Veda Samskruti Samiti, most of the things are from Vedic origin. It seems Patanjali has borrowed these 8 concepts from Vedas, and Rigveda contains more than 12 places the reference to this yoga. These 2 are my doubts. Otherwise, it's a very excellent lecture with scientific analysis and with very good presentation. Thank you, sir. Sir, जहाँ तक निरोध चित्त वृत्ति निरोध यानी कि अपनी वृत्तियों को रोकने का जो सवाल है वो हम प्रत्याहार के द्वारा करते हैं. ठीक है, इसमें यम और नियम भी हमारी बहुत मदद करते हैं. जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपने लाइफ स्टाइल को डिसिप्लिन करते जाते हैं, ठीक है, तो हम खुद कॉन्शियस होते चले जाते हैं. सबसे पहला पॉइंट कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले तो वो सुधार आने लगता है हमारे मन पे भी, हमारी सोच पे भी और हमारे शरीर पे भी. फिर उसके बाद जैसे प्रत्याहार है जिसकी वजह से पूरा ध्यान हमारा जो बाहर की तरफ फैला हुआ है, हमारे जो सेंसेस हैं उससे हम जब अंदर की तरफ उनको मोड़ते हैं तो हमारा जो मन है वो शांत होता है, दिमाग पे रोक लगती है, दिमाग शांत होता है और धीरे धीरे हमारी जो ये वृत्तियां हैं वो कम होने लगती हैं. सो प्रत्याहार बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है. प्रत्याहार की साधना हमारी वृत्तियों को रोकने के लिए. Ma'am, can I ask you one question? Yes, sir. Yes, please. Yeah. How old is this yoga? And where it has, where does it inherited? Is it that Patanjali has brought out this around 150 years back, and that was the beginning, or is it much before that? No. ये जब से सृष्टि है
मतलब भगवान शिव ने मैं मतलब बोल नहीं पाऊंगी पूरा परफेक्टली लैंग्वेज, लेकिन सबसे पहले आसनास जो किए थे वो भगवान शिव ने किए थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ये मतलब सतयुग से हर एक युग में आता रहा, और पतंजलि जी ने तो सिर्फ जो योगा के जो सूत्र थे उनको एकत्र किया था और अपनी एक बुक में उन्हें लिखा था, पतंजलि योग सूत्र जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जब से सृष्टि है, मतलब भगवान शिव जी के युग से ही योग है। और प्राचीन काल में हम जब देखें सतयुग में जो मुनि थे, ऋषि मुनि थे, वो जब तपस्या करते थे तभी से ही वो योगा को अप्लाई करते थे, बिकॉज योगा के द्वारा सबसे पहले जो यम नियम के द्वारा वो अपने शरीर को शुद्ध करते थे। आसनास के द्वारा अपने पूरी बॉडी को वो इस तरह से फ्लेक्सिबल करते थे। हमने कई पिक्चर्स पे देखे होंगे कि एक योगी, एक ऋषि मुनि वृक्षासन की स्थिति में, यानी कि एक पांव पे खड़ा होके भक्ति कर रहा है, ठीक है। और ये भक्ति उनकी एक कुछ क्षणों के लिए नहीं होती थी, वो 100 500 साल तक भक्ति किया करते थे। तो उसके लिए उनको एक निरोगी काया चाहिए होती थी, ऐसी काया जो कि उनकी भक्ति में विघ्न न डाले, ठीक है, वो डिस्टर्ब नहीं करे। और ऐसा शरीर जो कि 500 साल तक या 100 साल तक एक ही अवस्था में उनको रखने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए लायक हो, उसके लिए वो आसनास करते थे। उसके बाद वो मतलब प्राणायाम के थ्रू अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करते थे, ठीक है। तो प्राणायाम के जैसा कि मैंने पहले बोला, आपको समझा, मतलब एक्सप्लेन किया कि प्राणायाम क्या होता है, अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करना। प्राणायाम के द्वारा वो अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करते थे। ब्रीथ को कंट्रोल करते करते उनका दिमाग कंट्रोल होता था, उनका दिमाग शांत होता था। और धारणा के द्वारा, धारणा, ध्यान, फिर समाधि, तो धारणा के द्वारा वो अपने शांत दिमाग को एक पॉइंट पे फोकस करते थे और धीरे 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 वो अपनी आत्मा को, अपने ध्यान को ऊपर की तरफ खींचते थे और समाधि को प्राप्त करते थे। सो योगा इज, can you tell me one more thing? What is the purpose of yoga? मोक्ष, समाधि। योग का परम लक्ष्य है मोक्ष। जो आज के युग में हम कहते हैं ना कि योग मतलब जैसे एक अच्छा शरीर या पतले होने के लिए या सुगठित शरीर, नो, दैट इज रॉन्ग, दैट इज टोटली रॉन्ग कंसेप्ट जो आजकल हमने एक फैशन बना लिया, यू नो, वी कॉपी अदर्स कि हाँ हम भी योग करते हैं, लेकिन योग करते कैसे हैं और किस लक्ष्य से, किस पॉजिटिवनेस के साथ योग करते हैं, दैट मतलब वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। No, moksha is mukti, you know. Oh, mukti. See, no, that once you get into that Richa ji, state, please wait. thereafter you are not living, you know. You are Richa ji, already please wait. there with the. Kanal ji, please wait. Kanal ji, please wait. Kanal ji, Richa ji, please wait. Murthy garu meer maatladandi, please. Madam, namaskar. Namaste. Namaskar. Madam, we are doing the meditation and the yoga exercises, meditation every day. You referred about the subconsciousness. Now, I would like to know more about the subconscious state. Is, you know, very difficult to the subconscious state, you know. And okay, perhaps if you go to the subconsciousness, how much time is there in literature on that? How much time is to be there in the subconscious state? What is the minimum time? That is what exactly, and what are the effects of subconsciousness with reference to the time frame of subconscious time? See, Richa ji, please wait. Richa ji. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Time is over now. Make it very short. And we have got another speaker now. Next speaker is there. So make it your answer. Make it very short, please. Okay. Yeah. Sir, I would like to say that subconsciousness का time से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड तब काम करता है जब हमारा कॉन्शियस माइंड हमारा साथ देना बंद कर देता है, ठीक है। अब जैसे हमारे अंदर जो एक पॉजिटिविटी, यू नो, अगर हम कोई काम करना चाहते हैं, ठीक है, सब लोग बोलते हैं कि नहीं तू ये नहीं कर पाएगा या आप ये नहीं कर पाओगे, लेकिन उसके बाद में भी कहीं ना कहीं अंदर से हमारे अंदर एक पॉजिटिवनेस होती है, एक दृढ़ संकल्प होता है कि नहीं मैं ये कर पाऊंगा। लेकिन ये दृढ़ संकल्प तभी आता है जब हमारी हम अपने आप को पॉजिटिवनेस, ऑटो सजेशंस देते रहते हैं। नहीं, डेली की ये बात है, ये एक पल की या एक सेकंड की या एक दिन की बात नहीं है,
जब डेली डेली हम अपने आप से बोलते रहते हैं नहीं, आई एम कैपेबल ऑफ दिस, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं एक्टिव हूँ, आई कैन डू दिस, आई एम अ फ्री सोल, तो ये जो थॉट्स हैं वो सबकॉन्शियस माइंड लेता रहता है। और जब हम थोड़ा सा भी वीक पड़ते हैं तभी ये सबकॉन्शियस माइंड हमारी हेल्प करता है। किस तरह से? जैसे कि मैं एक बात बताना चाहती हूँ, हम साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, अब हम दो जने हैं, हम आपस में बातें कर रहे हैं या फिर हम कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, हमारा ध्यान सॉन्ग में है लेकिन ध्यान संगीत में है, उसके बावजूद भी हम साइकिल चलाते चलाते ऑटोमेटिकली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त दो चीजें हुई। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो कहाँ ऑक्यूपाई था? संगीत सुनने में या बात करने में, उसके बावजूद भी हम परफेक्टली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। ये किसने किया? सबकॉन्शियस माइंड ने किया, ठीक है। तो जो पॉजिटिव सजेशंस हमें रोज देने हैं सबकॉन्शियस माइंड को, वो तब काम करेगा जब हम थोड़ी थोड़ी अपनी हिम्मत हारने लगते हैं या फिर हमारे नेगेटिव थॉट्स हम पे हावी होने लगते हैं, तब हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली हम पे हावी होने लगता है कि नहीं, हम ये कर सकते हैं, वी आर पॉजिटिव, वी आर एक्टिव, वी आर हेल्दी। इन दिस वे सबकॉन्शियसनेस वर्क्स अ लॉट। और इसीलिए मैं इंसिस्ट करूंगी कि रोज मेडिटेशन करनी चाहिए, रोज अपने आप को ऑटो सजेशंस देने चाहिए, रोज पॉजिटिव थॉट्स हमें देने चाहिए, एंड इट वर्क्स अमेजिंगली। Thank you very much. We are closing this session here. We are starting the next session. Thank you so much. Thank you very much, Richa ji. You have done an excellent job, and a lot of discussions are there. People have participated very well. We thank you very much, everybody who has participated in this. Since we have got short of time, we have asked another speaker to come at 11 o'clock. So already we have crossed 10 minutes. So sorry for stopping your lecture here. No, not at all. Not at all. No, we'll go to the next lecture now. Thank you very much, Richa ji. Thank you very much for presenting your paper. Nice of you. Thank you. So now I invite Dr. Preeti from Swami Research Institute, Chennai, to present her paper on oceanography, please. Please introduce yourself and then go ahead. Sure. Namaskar, Gurubhyo Namaha. I am Dr. B. Preeti, working as an assistant professor in the esteemed institution, the Swami Shastri Research Institute. Before starting my paper, I would like to share few things about our institute. Our institute was started in the year 1944, founded in the year 1944 in the memory of Professor S. Swami Shastri, the first principal of the Madras Sanskrit College. Retired Honorable V.S. Srinivasa Shastri was the founder president, and Dr. S. Radhakrishnan, former president of India, had also been the president to our institute for the nearly 2 decades. Padma Bhushan Dr. B. Raghavan, Sanskrit scholar, was our founder and secretary of our institute, and our institute got affiliated to the University of Madras during 1982 for the program MPhil and PhD programs. Guided by Dr. B. Raghavan, Dr. S.S. Janaki took over and took care of the institute and continuing the works started by Dr. B. Raghavan and the ancestors. After her, Dr. V. Kameshwari presently continuing the works, and along with the 2 deputy directors, Dr. K.S. Balasubramaniam and Dr. T.V. Vasudeva sir. And we are in 1927, Professor Swami Shastri started the journal Oriental of Research in Madras, and once the institute started, the institute started publishing the journal, and now presently we are working on the 93rd volume of our journal, and also our journal is recognized by UGC Cabinet. Excellent. Please go ahead with the paper. Yes. Today I'm going to talk about ancient Indian knowledge of oceanography. As a beginner, here, whatever the information I have collected about this topic and whatever the information I have learned, I'm going to present here. Samudra or ocean occupies a major part of the Earth's surface, and it plays a vital role in regulating the Earth's climate.
It supplies food and mineral resources and is the final destination of many waste products. The study of oceans, their contents, etc., is collectively termed as oceanology or oceanography. Oceanography is classified into 4 types: physical oceanography, chemical oceanography, biological oceanography, geological oceanography. Physical oceanography is the study of temperature, waves, currents, and tides of seawater. Chemical oceanography is the study of composition of seawater and the biogeochemical cycles that affect it. Biological oceanography is the study of biological organisms in the ocean, fish, and marine mammals. The geological oceanography is the study of structure, features, and evolution of the ocean basins. Physical oceanography, the Rig Veda shows knowledge of ocean waves. Sindhorurmeriva Svanaha. The Rig Veda talks about the winds as the cause of movement in ocean water. Again, Rig Veda presents an idea about high tide when it says Samudrena Shravanaskyavaha. The Rig Veda talks about the fire within the waters, probably the Vadavagni. Nidhiya mana mapagulha mapsu prame devanam vratapa uvacha indro vidvam anuhitva chachaksha tenaha magne anuchishta agam. The Taittiriya Samhita records the phenomena of the tides when it says Samudram abhitaha pinvamatam. Where the term abhida implies tides on all sides. The Vajasane Samhita refers to the tides as the gathered flood of ocean. The Shatapatha Brahmana says that the ocean flows in every direction. This Brahmana, a work that contains wonderful and in-depth cultural data, gives an idea of the ocean currents for the first time in Indian literature. For instance, Shatapatha Brahmana gives information about ocean current flowing southwards from the east and talks about the ocean flowing all around the world from left to right. Maitrayani Samhita affirms that tides are uncontrollable. Samudra Veleva Durnivaryam. The Ramayana also mentions that the lunar patterns causes tides to make place in the ocean. Vivardhamano Vidyena Samudraiva Parvasu Parvasu Udirna Vegasya Sagarasyeva Nisvanaha. The Ramayana also enumerates the presence of Vadavagni. Tatra Vikroshatam Nado Bhutanam Sagarokasam Shruyate cha Samarthanam Drishtva Tad Badava Mukham. There are references to other features of the ocean like the island, bays, or kacha. Ocean deeps and submarine mountains are also referred in Ramayana. The Mahabharata records that the coastal people were well aware of the phenomena of tides and knew that the moon is its cause. Chandra Vriddhi Kshayadudgrittormi Samakulam. Chandra Vriddhi Kshayadudgrittormi Samakulam. And the new and full moon days are special occasions. Samudrasyeva Parvani. The concept of Vadavagni persists right from the Vedic times and has been developed over time. The Puranas give information about Vadavagni, its origin, its nature, its epicenter, its effects both negative and positive, and its role in the destruction of the universe known as Pralaya. The tides, their causation, amplitude, and various other aspects are found mentioned in the Puranas almost accurately. A clear description of tides being influenced by the waxing and waning of moon is given in the Matsya Purana. Udayatindo Purvetu Samudraha Puryate Sada Kshayavriddhi Samudrasya Shashivriddhi Kshaye Yatha. Poet Kalidasa has also talked about the ocean and their properties in his kavyas. He was acquainted with the concept of the 7 oceans. He also knew about the tides and their causes. He also refers about the tides. I have given the shloka here.
प्रवृत्तमात्रेण पयांसि पातुमावर्त वेगात् भ्रमता घनेन आभाति भूयिष्ठमयं समुद्रः प्रमत्तमानो गिरिनेव भूयः. In the Kumara Sambhava, he says, Harastu kinchit parilupta dhairya chandro dayarambha ivambhurashihi. In addition to all these, we also get to know information about the use of compass made of magnet, which always point to north and south. The Mahabharata and Kumara Sambhava and many other texts refers to this Ayaskanta. An eminent historian has said the following about the marine's compass, which is an indispensable tool for overseas voyage. The Hindu compass was an iron fish which floated in the vessel of oil and pointed to the north. The fact of this older Hindu compass seems placed beyond doubt by the Sanskrit work Matsyayantra. Biological oceanography. The Vajasaneya Samhita records that there was a type of ocean vegetation or plankton, and they called this life as Samudrasya Abaka. There are 8,400,000 species of creatures divided into 4 main classes. They are Andajas, born of eggs, Shvetajas, sweat-born, like bugs, etc., Udbhijas, born of seeds, Jarayujas, the viviparas. Chaturashiti lakshani, chaturbhedascha jantavaha, Andajaha, Shvetajaschaiva, Udbhijascha Jarayujaha. There is no reference to the number of species underwater. In modern science, they go up to 4 to 6 million species are identified. The Ramayana, Indians' knowledge of oceanic flora and fauna is considerable. The Ramayana reveals the exhaustive knowledge about the ocean fauna and ocean health. Whales, large fishes, sharks, tortoises, creatures of various forms by thousands, and crocodiles are specially mentioned in the Mahabharata. Timingala Jasha Kirnam Makaraira Vritam Tatha Ugrair Nitya Manadrishyam Kurma Grahasa Makulam. The coastal people were aware of the pearls and other wealth of the ocean. Dadrisha te tatra samudram nidhimambhasam mahanta mudakagadham shobhyamanam mahaswanam. Kautilya was fully acquainted with corals, pearls, the place of their occurrence and the process of their fishing in the Navadyaksha section. Poet Kalidasa also tells us that the ocean has many things like mountains, sharks, large fishes, coral reefs, and conches. In addition, he talks about the sandy beaches, oysters, and pearls. Rasataladadi bhavena pumsa Bhuvaha prayuktodvahana kriyayaha asyachamambhaha pralaya pravridham muhurta vakravaranam babhuva matanga nakreihi sahasot patadbhir bhinnat vidha pashya samudra phenat. Professor M.S. Tripathi, in his book Development of Geographic Knowledge in Ancient India, writes that in the Vinaya Pitika, the seed of oceanography is clearly discernible. The text for the first time has tried to discuss or present the subject systematically. This text has presented some concepts of bathymetric survey, underwater topography of the ocean floor, continental shelf, some types of abysses, fluidity of its water level, its universal salinity, rocks, pearls, corals, and large number of mineral contents together with its fauna. Geological oceanography. The people of India, even from the Vedic times, seem to have had a deeply extensive knowledge of our ocean, along with its routes, navigation, and trade. Rigveda confirms this idea when it thanks the Ashwins for navigating a ship with 100 oars. In the same context, Rigveda talks about the traveling to another place, probably an island, Samudrasya Dhanvanna Ardrasya Pare. The time at which the ocean were classified into 7 different types
cannot be dated accurately because the classification had been varied in numbers. Rigveda mentions two oceans, namely Eastern and Western. Ubhau Samudrava Ksheti Yascha Purva Utaparaha. And talk about Rigveda talk about the four oceans. Chatura Samudram Dharunam Rayinam is interpreted by Mahidhara as 7 oceans. The Samaveda and Atharva Veda show us that there were 4 oceans, and they also tell us about the wealth that was available within these oceans. By the time of the Ramayana, the knowledge of the 7 oceans had come to prevail as seen in the Aranyakanda. Chintite Abhyagatan Pashya Sahitan Saptasagaran Saptanam sa Samudranameshu Tirtheshu Lakshmana. It talks of the saline ocean, Navanarnava, ocean of fresh or pure water. Kshirodam Samatikramya Tato Drakshita Vanaraha Jalodam Sagara Shrishtam. The milk ocean, Tataha Pandara Meghabham Kshirodam Nama Sagaram, and the Red Sea. The Mahabharata establishes the classification of the 7 oceans in the chapter 11 to 12 of the Bhishma Parva, where the Saptadvipas are described by Sanjaya to Dhritarashtra. The names of the seas surrounding them is also described. However, only 6 names are given: Lavana, Dhrita, Dadhi, Sura, Jaloda, and Kshirodha. Ikshu ocean is mentioned later after a few chapters. By the time of Mahabharata, Indians seem to have developed ocean navigation well, as we come to know in the Vanaparva, where reference to merchants crossing the ocean by ship. In the chapter and Navadyaksha in the Adhikara 2 of the Kautilya's Arthashastra, the author establishes that ocean navigation and coastal shipping was well developed. Manusmriti testifies to the flourishing state of ocean navigation and trade when it says that the boat hire must be proportional to the places and time, which refers to passage along the bank of rivers. At the sea, there is no settled freight. The 7 oceans, according to the Puranas, were named Lavana, Ikshu, Sura, Dhrita, Dadhi, Dugdha, and Jalodha. They were also measured in terms of yojanas. The Panchatantra calls a big ocean trade as Samyatrikaha. The Kathasarit Sagara of Somadeva reveals that Indians undertook ocean voyages frequently. For denoting very big ocean going vessels, texts use the term Yanapatra and Pravahana. Some Jain works, like the commentary of Akalanka Deva and the Tattartha Digama and the Brihakshetra Samasa Tika, enumerate 8 conspicuous oceans: Lavanodha, Kalodha, Pushkarodha, Varunoda, Kshirodha, Dhritoda, Ikshuda, Nandishwaroda. The Vrihakshetra Samasa Tika adds Arunavarodha as the 9th ocean. The Jain possesses a very fanciful idea about the causation of tides. The Avasyaka Sutra tells us that Indians were much advanced in navigation and maritime commerce. Oceanography and ocean navigation also took big leaps of improvement during the Buddhist period. They were the first group of people who introduced an element of scientific study to the oceans. This is apart from the fact that they were very well versed with the commercial importance of the oceans as highways for transport and communication. On the practical side, Indian navigation reached its highest peak during the reign of Chola dynasty, but it is not often mentioned in the history. Rajaraja the Great and his successors made a great efforts to improve Indian navigation, which reached its pinnacle during their rule. There are several inscriptions about Rajendra Chola.
There are several inscriptions about Rajendra Chola that help us to understand that the Chola dynasty had vastly improved the knowledge of oceanography and hydrometeorology. Inscriptions dated between 1024-1042 CE provide a graphic, detailed account of Rajendra Chola's overseas campaigns. It is said that the Cholas reduced the Bay of Bengal to a domestic Chola lake. Chemical oceanography. As said in the beginning, chemical oceanography concentrates on analyzing the composition of seawater and the biochemical cycles that affect it. From our literature, starting from the Vedas, we come to know very little about the chemical contents of the seawater. Of the 7 oceans enumerated earlier, one can understand the terms Lavanarnava, meaning salty ocean, and the Jaloda, referring to fresh water. The other terms, Vidda, Dadi, Sura, Kshiroda, and Ikshu, do not give us any detail about their contents. Hence, much is not known about chemical oceanography from our text. Conclusion: a vast majority of the Earth's surface is covered in water. In order to understand the Earth's changing climate, we have to look into the facts related to ocean circulation and the coupling of the ocean and atmosphere. This brings into account the vast diversity of flora and fauna of the ocean, critical to Earth's biochemical cycles. The science of oceanography can be used to discover many things that are still unknown in our oceans. Despite the absence of modern technology and equipment in ancient times, our ancestors have been well aware of the importance of the oceans in our daily life, and thus they have presented the various details about the ocean from their observations. This paper is a humble attempt to bring out ancient Indian knowledge of oceanography and how it is on par with modern oceanography with all its 4 major divisions, namely physical, biological, geographical, and chemical oceanography. Scope for further research. Extensive research can be done in the field of chemical oceanography since it is a separate branch, and I couldn't find more detail about it. I have given whatever I have learned. And Kshirabdi Mathana is also the part of the oceanography, and it is a vast and vast and big topic. So in connection with Kshirabdi Mathana, in connection with modern science, it itself a separate topic. A detailed study can also be done in this topic. In modern science, they go up to 4 to 6 million aquatic species, and they have mentioned about it. The Puranas and literature also mention the aquatic animals on which research has to be done. Thank you. Thank you very much, Preeti ji. You have given an excellent topic and provided a lot of material and quotations from various Vaidika Samskrita Grandhas. Thank you very much. I invite the people experts to give their opinion, and others, anybody who is having doubts, may interact with the speaker. Please. We have half an hour time. 28 minutes time is there. Please go ahead. Jai Guru, Hari Kumari. It's a very nice and easy way to understand us. Puranas are having all these techniques of modern. Actually, in the absence of modern technique, they found it is not the, I think, the correct assessment. Actually, more than this modern technique, there could have been so much technology, but we didn't have now. It has disappeared in the vast time. Again, from zero, we are taking. Now, in the peak, if we go, what will happen? We don't know. Again, it might have vanished. Again, it will come. This is a cycle. So those people, more than this modern technology, maybe they are great and great modern scientists.
The word Rishi is actually meaning a scientist. Amma has taken very nice presentation. Thank you, Amma. Thank you. Yes, sir. Praveen ji, Praveen ji. Praveen ji. Hari Om. Anybody else? Suvarna. Suvarna ji, please speak. Please unmute Suvarna ji. Please unmute to speak, Suvarna ji. Open your video, we'll understand your feelings at least. What is your problem? Yeah. Suvarna ji. Nagamani ji, Ratnam ji. Ratnam ji, Yes. please speak. Yeah. Namaste, sir. Preeti ji, it was a very enlightening lecture, and a lot of things that were present, the knowledge that was present in the ancient shastras is really, it is astonishing that people knew so many things about it. Even today, I don't think so much of information is available. But the classification of the jivas in the underwater is also very much in line with whatever is available today. Thank you very much for this very well developed lecture that you have given. Thank you, madam. Nagamani ji. Nagamani ji, please. Nagamani ji, your doubts, any doubts or any opinion? Nagamani ji, see. Hari Om. Madam, I have one clarification or doubt kind of thing. So, as your topic is in oceanography and all the chemical related kind of thing, is there any possibility we can see this Sagara Madhana in the that Puranas we see that thing? Vishnu, Shiva, all these people have participated and bring out the useful things and the unuseful things and separating from the Sagara. Is it possible we can look that is also a part of this subject kind of thing? Priti ji. Sagara Mathanam is a. Am I audible, sir? Pardon? Yeah, yes, audible. Please wait. Priti ji, please answer. Sagara Mathanam is a different, it is connected with oceanography, of course, and it is a vast subject. That is why I couldn't take it. It is explained by our Professor Geography, sir. Whatever I know, I would like to share here. Sagara Mathanam is like the war between the Deva Asura war. Basically, it starts like this. In the 2 billion years ago, the Swayambhu Manu, in the Swayambhu Manu, in the Rudra Srishti, terrible creatures were created. And in the Prachetas period, Swarashashta Uttama in our Uttama Manu, the invasion of maximum forest invasion of maximum forest has been made, and in the Amrita Mathana is called as the cataclysmic change on land, and the Devasura war is called as the cataclysmic change. In the early Chakshusha Manu, that is 320 to 250 million years ago, reptile and amphibians age, that is they were moved into the land, and they return to the ocean again once the Sagar Mathana is over, and then again they come to the land permanently. Basically, the Devasura Yuddha and it's called as the cataclysmic change. Okay. Answer is over. Answer is over.
Yes, yes, sir. So the Yeah, then, Achiredi garu, please. Please, Achiredi garu, please. Sir, Sarvebhyo Namaskara Andariki. Sir, it is a very well presented lecture, but I raise very few doubts. The oceanography is there extensively mentioned in Rig Veda, as Preeti madam already mentioned. Its size also is there. In the 8th sukta of first mandala, 7th mantra, the size is as big as the stomach of Indra. Indra's stomach is so big as this ocean. And about 20 mentions are there in the first mandala about the different aspects of this ocean or samudra. In every mandala, there is a reference, and the large number of references are there in 9th and 10th mandalas about the different flora present there, fauna, about the corals, about the mountains, about the Badavagni. I think many of these things are mentioned by Priti madam, but the only thing which I would like to share here is that each mandala has got some specific reference to the oceans or samudra. ఇది కనెక్ట్ చేసుకుని వాడు ఇచ్చేస్తాడు అంటుంటే. And these aspects are later mentioned in other Vedas and also Puranas and also epics like Ramayana and Mahabharata. That's what I would like to share here. And my doubt is this Samudra Manthana is a great logical thinking of the modern interpretation of this formation of this earth, geologically speaking. I think Preeti madam be knowing it. If she knows, I would like her to explain what is the relation between this Manthana and the geology. That's my question, sir. Preeti ji. So can you repeat the question? What is the relation between this Samudra Manthana? Samudra Manthana is there. I think it is a very famous concept. Samudra Manthana is there in such of the geological objects. So from there, many things were born and they were shared by these gods and rakshasas. I don't go into the details. But is there any, modern geological significance to this Samudra Manthana? That is my doubt. If you don't know, please explain it. Please, okay. As I'm a beginner to this subject, I would request to ask our geography sir who is joined in this meeting. Geography sir? Sir. Namaste. Swagatam, please explain to the audience, please. You please just give me the question correctly. I have not taken the question properly. Sagaramatanam, yes, and then? Is it any difference to the modern geology? Modern geology? Yes, yeah. What is, I don't know what aspect of modern geology the other speaker is referring to. Modern geology, Puranas actually talk about geology at various levels, but what the particular modern geological aspect the particular speaker is asking, I'm not able to follow. Okay, whether it is geology or anything, how it is related to modern science, kindly explain. Yes, sir. Actually, I am specially studying Puranas and interpreting the modern ideas that are present in the Puranas. What I find is that the Devasura wars are usually representing the fight between the Devic forces or earth building forces and Asuric forces, earth destroying forces. Earth features continents, oceans, climate, species,
are not always same. They are all changing. They come as Prajapatis, new set of organisms come, and there are periods when they die. So these things are usually represented in the form of Devasura wars. And as I find the Amrita Mathana, during the period, the Amrita Mathana, according to Puranas, happened during the Chakshusha Manvantara. Now the present Manvantara is Vaivaswata Manvantara, and 28 Chaturigas, 120 million years have passed. So previously, another 300 million years, the Chakshusha Manvantara. According to the natural science, it was that during this period, species from the ocean, amphibians and other things, reptiles and other things, invaded the earth. According to Purana, we have got the Prachetas. During the period of Prachetas, which happened according to Purana, it is in the Raivatamanu period. Raivatamanu period, about 400 million years ago, the forests from the ocean or vegetation from the ocean invaded, and that is according to a natural scientist, it's called maxim forest. The entire earth became forested, and following that, all the reptiles and other organisms invaded the earth. And after some time, conditions were not favorable on the earth, maybe due to some volcanic action or other things. So because of that, all these species returned back to ocean. And after some time, once more, the land became conducive and they returned. Thus we find the Amrita Matra is not a single incident. It comprises of three aspects. One, the invasion of all organisms from ocean to the land, and then we have got the return. According to the Puranas, the Amrita Madana, the starting of the Amrita Madana is the Mahabali invading the Indra, in the process carrying all the celestial trees and animals and other things, and they fall into the Milky Ocean. They disappear in the Milky Ocean. And then in Amrita Madana, they are retrieved back. So I interpret this as the earth being populated by organisms from the ocean, that is all serpents and other even crocodiles and other things, and all Tiryak Jantus, they came only this period. For example, in Puranas, first Taksha Prajapati was there in the second Manvantara, that is the Swarojisha Manvantara. And during his period, he was killed by Shiva. And then in his reincarnation, if you see Bhagavata and other things, he comes back during Chakshusha Manvantara. The Chakshusha Manvantara is about 300 or 300 million years ago. And according to our natural science, it is during that period only all the species have come into existence. All the Tiryak Jantus, all the donkeys, all cat families and other animals, and all reptiles. It is the period. According to Purana, it is the second Daksha period, during which time he has got 60 daughters. He gives to different rishis, and through different rishis, birds and other things come according to our stories. Isn't that? In the same way, this incident that is referred to in the Puranas as the second Daksha period, that is Chakshusha Manvantara period, is clearly represented in the is having correlation in the with the geological, I mean natural science also. Similarly, in the case of Kshiroda Madana also happened. There is a reversal of organism moving from sea to land, land to sea, and back to land. So I find there is a lot of correlation between between the geological and natural history and then the Puranic incidences. I will ask just one very interesting slide to you, which will take only 1 minute, and you will explain. Miss Preeti, Mrs. Preeti, can you show me the 4 supercontinents? The slide, please. Yes, sir. Sure. I'm sharing. Please. Please. Please see here a beautiful slide I have taken. See the bottom left is the present position of the continents. According to Puranas, supercontinents will be created, or continents will be created in every Manvantara by Prithu, according to Kurma Purana. So, and the latest creation was during the period of Chakshusha Manvantara, according to Bhagavata.
So Chakshusa Manvantara, when it was there, according to my tradition, so now we are in the Vaivasata Manu, 120 million years past. So another 300, each Manvantara is 300 million years. So one super continent will be there, and the super continent, all continent will be joined together. Then they will be broken into 4 or 6 or 7 divisions by one force, natural force, who is called Pritu. These are all personification. Names are all personification, not personalities. So here the continents are divided, oceans are created in between, and all species will evolve during that period. So about the Chakshusa Manvantara end, I find you can see in the bottom right, 175 million years ago, a supercontinent was there. Then according to Purana, the brother of, that is Uttanapada and Priyavrata divides it into 7 continents. Then another 300 million years ago, during the Raivata Manu period, if we correlate, we find another, which according to geology, this is Ordovician period, we find another supercontinent, another Manvantara. And again, you go another 300 during the Tamasa Manu period, 700 million years or 750 million years, supercontinent, and they are also divided. So in this way, the continents are divided, and we find in the latest division only, the Priyavrata period only, all the species come back. And the in between that, whenever the conditions are not favorable on land, species will retreat back to ocean. Whenever the conditions are favorable on land, they will come back. This is according to the natural history. That is beautifully explained in our Puranas, and the best example is the Amrita Matana. That is how I interpret, sir. Namaste. Thank you very much for giving me the opportunity. One more request, sir. As you come here as senior person, can you explain us these 7 types of oceans, and how do you interpret them? The Cheram and Lavanam and Ichu. How do you interpret the present context of oceans? Any research has been done in KSRI on this? We are studying various aspects, sir, but we have not understood all aspects. The one beautiful thing is that there are certain names are based on the properties of the ocean water. So the Lavana Samudra is based on the property of the ocean water. It is very clear. Then Suddhodaka, or the freshwater ocean, that is also very clear, because that shows that people are very much aware of all the ocean. For example, if you go to polar region, what you call Baltic Sea or Gulf of Bothnia near Norway and Sweden, there, because wherever ice is covering the ocean, because of the melt ice, the ocean water will be fresher than our river water. Salt will not be there at all. So Suddhodaka, about freshwater ocean, and the last one is again a very clear indication of the clear understanding. But other names seems to be Kshirodaya, Grutam, and all other things. Maybe they are Upachara Vata. They have given names, surnames like that. I don't think so. There is no reference, or there is no clear-cut indication to show actually they had that property. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Anybody? Murthy would you like to share? Sir, I would like to share. Please. Dr. Preeti Madam, you have given the excellent talk on Asian oceanography. I would like to share a very little knowledge what I got in the oceanography, which I learned from colleague scientists from. We have in CSIR 2 laboratories working on oceanography. One is National Geophysical Research Institute at Hyderabad, and also one institute called National Institute of Oceanography at Goa. You may be knowing, perhaps. In National Oceanography Goa, they have built a vessel called Sagar Kanya, a research vessel with all facilities to get more knowledge on the oceanographic structures in the mining, fisheries, and etc. Everything, all, whether chemical or oceanographic features, including the water, the minerals, the rocks, the fungi,
everything, including the calamities, how it will happen from the oceanographic functions underground. That is a vessel that was built. The research is going on in the Goa Institute of Oceanography. Also in NGRI, some of the scientists worked in gas hydrates in the oceanography. These gas hydrates, perhaps if you make it, the gas hydrates, if you locate it, and if you can analyze and extract, there is a lot of, there will not be any problem for the gas for the country for centuries together. That is how the gas hydrates develop in the ocean. So this type of research is going on. And also in the medical benefits of the rocks, the fungi and the fisheries, all these things, experiments are going on. What I just suggest is not a question, is from your Rigveda and Adharma Veda, all these slokas which are related to the scientific may be translated and may be given a form so that these type of sciences are available in our ancient oceanographic literature, Veda and Adharma Veda, and submit to the oceanographic people so that they can have analyzed these things also, look into the consideration and take into the consideration for the research and develop, keeping on the ancient oceanographic programs. That is my submission, that how we can make it this type of translation to reach to the oceanographic scientists which are working in this country. They are doing a wonderful job. This also will be a reference to them so that our ancient culture, ancient oceanography also, our Vedas also, how it has taught and where we can apply these research in the oceanographic science. That is what my submission is. That's all. Thank you. Thank you, sir. Thank you. It is very true that out of 84 lakhs of Javarasis, only a few, maybe 50% or maybe less than 50% have been, I don't know, even 50% is done there. Research have been found out from the present scientists. How our knowledge, our rishis would estimate there are 84 lakhs of Javarasis were there. On what is the basis? Whether anywhere in the Veda Vangayam that mention was there and any basis was there to come to that conclusion of 84 lakhs. That is still to be research done. I'm very much not sure. I'm not sure how that 84 million lakhs has come to the figure has been arrived at, on what basis. So whether even if you ask the modern scientists, they also not reached that level. So that means our people have made some great study in those days and must have arrived at that figure. Those rishis must be having that knowledge, and which we could not do with the present available literature of Veda Vangmayam we have. We have lost a lot of sakas. We have lost out of 1131 sakas, we have got only now 13, 11 or 12 sakas. The remaining sakas, what they're teaching, what they're telling, we don't know. So maybe there somewhere some knowledge must be there, still to be research is to be done, and a lot of work is to be done on this field of oceanography, which is a really a great job to be done and a great scope for the people to do research on Veda Vangmayam. Can I say something? Yeah, one thing, sure. So in this contest, I request the Sanskrit scholars, modern scientists, and Veda Pandits come together, form a joint research organization and do this service, then this will give a great effort. Swami, Swamiji, please, your opinion. This 84 lakhs calculation is done in Brahmanda Purana. So we go by the 4 types of, as she mentioned, Udbeja, Svedaja, Andaja and Yonija. So that 4 types of categories are being given. Udbeja is all plants. Svedaja is all the mosquitoes and all that which are born in the humidity. Then Andaja is all the born of the eggs and Yonija is all mammals. Now, I can send you the details about the Brahmanda Purana has given the all calculations, how many types of the Udbejas are there, how many types of the Yonijas are there. So it is there already, the calculation. But we have to, as it is mentioned, we have to
match the present calculation of the animals and plants and what the future in the Brahmanda Purana is mentioned, that matching we have to do. The details of Brahmanda Purana, whatever I have, I can send you that on the WhatsApp group. So what I want to bring to you, as Madam, as Mahoday, whatever you told, that is perfectly correct. I agree with your information. What I am saying is there is a lot of scope for Indian scientists to bring forward, because the most of the things modern scientists have not completely analyzed that 84 lakhs. Still, much less they have analyzed it till now. Yes. So with the knowledge that is available on Brahmanda Purana, why not our people take research on that aspect and make bring forward, bring out from the Veda Samskruti about our ancient knowledge. There is a lot of scope for the people to do on that. Please tell me, Sir, one vision. Actually, the natural scientists say that from the beginning of the Earth, evolution of Earth, till date, 13 to 14 million species have evolved, and today we are able to identify 5 to 6 million species. So their calculation is 13 to 14 million. Many of them have disappeared, which we find only through fossils. And so, according to natural scientists, 14 million species have evolved so far. The beauty of our Hindu system is, even in olden days, all these discoveries in the Western world is only recently, within 100 years. How our people thousands of years ago could evolve a number which could match this. Neither it is not a few thousand or not crores. In between, this figure is very, very decent figure, 84 lakhs. So that shows that the greatness of our people. That's my humble submission. So with this, we close this session. Now perfectly 1 hour completed. Thank you very much, Preeti and Dr. Preeti ji and Dr. Parsarthi Garu from KSRI. KSRI is a great institute doing a lot of service in research of Sanskrit Vangmaya, Veda Vangmayam. And we all should support, and we take the treasure that is available in KSRI. And more people may get in touch with KSRI and help their research. We hope in future also KSRI will give us more papers on the research and help our people to get more knowledge on this Sanskrit Vangmayam. Thank you very much, Dr. Just Priti, one Dr. point I would Prasad like Garu. to add. Yeah, Raghavji, please. Raghav, please tell me. Just one small point I would like to add. It was a well-researched paper and scholarly paper presented. There are a lot of Sanskrit slokas which were mentioned. If they can give the meaning also, if she can give, then it will be helpful for us who are not well versed with the Sanskrit. We know only understand a bit of Sanskrit. Exactly. If we can add the meanings also in that, then we will be able Exactly. to. I also felt like that. Exactly. I also felt like that. We'll try to see that the meanings can be given in final shape of the paper. Yeah. Thank you. When we present the final shape of the paper in digital form in Souvenir, whether we can give a final shape, in the final shape, the details of the slokas may also be presented. Dr. Preeti, please kindly work on that and give us some meanings of those slokas also in the paper. Sure. Yeah, sure. Thank you. Thank you very much. Thank you for giving this opportunity. Yeah, thank you for giving us a presenting your paper to us. Thanks to the KSRI. Nice of you. We'll close the second session. Let us go to the third session now. I invite Dr. Tanisha Datta and Monisha Ghosh jointly presented this paper on the